A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Comprehensive English for class first year. Contents. Unit number 1, Responsibilities of the Youth, page 5. Unit 2, His First Flight, page 23. Unit 3, Good Timber, page 39. Unit 4, From Mother with Love, page 45. Unit 5, It's Country for Me, page 78. Unit 6, Mother to Son, page 93. Unit 7, Choice of Career, page 101. Unit 8, Wasteland, page 111. Unit 9, The White Lamb, page 119. Unit 10, The World is Too Much with Us, page 139. Unit 11, The Importance of Family, page 147. Unit 12, The Blanket, page 161. Unit 13, Ozymandias, page 175. Unit 14, A Long Walk Home, page 182. Unit 15, University Days, page 193. Unit 16, School versus Education, page 204. Unit 17, What You Do is What You Are, page 20 and page 213. Page 18, A Dream Within a Dream, page 223. Page 19, Drug Abuse in the Youth of Pakistan, page 233. Unit 20, How to Take a Job Interview, page 248. Unit 21, The Road Not Taken, page 264. Unit 22, The Progress, page 270. Unit 23, Summaries of Lessons, page 318. Page 24, Paraphrase and Explanation of Poem, page 338. Unit 25, Grammar, page 355. Unit 26, Letters, page 395. Unit 27, Applications, page 419. Page number 5, Unit 1, Responsibilities of the Youth. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level. With regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on, I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. मिस्टर चांसलर, ख़वातीन व हज़रात, जब वाइस चांसलर ने इस दरख्वास्त के साथ मुझसे रब्ता किया कि मैं कॉन्वोकेशन से ख़िताब करूं, तो मैंने उनसे ये वाज़ह कर दिया कि मैं इतना मसरूफ़ हूं कि एक तालीमी लेवल पर एक रस्मी कॉन्वोकेशन के मौके पर दिया जाने वाले ख़िताब तैयार ना कर सकूंगा। उन बड़े बड़े मज़ामीन से मुतल्लिक़ जिनमें यूनिवर्सिटी तालीम देती है, मसलन आर्ट्स, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून और इस तरह दूसरे मज़ामीन। ताहम मैंने इस मौके पर तलबा से चंद अल्फाज कहने का वादा किया और ये इसी वादे की पासदारी है कि मैं अब आपसे खिताब करूँगा। First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of the duty which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selflessly. Page number 6. सबसे पहले मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करने दो खुशामदी अंदाज में मेरा जिक्र करने पर। मिस्टर वाइस चांसलर, मैं जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी करने के काबिल रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ महज अपना फ़र्ज़ समझ कर किया है, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह दयानतदारी और बेलौस अंदाज अपने लोगों की खिदमत करे। In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend, as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I congratulate you, just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. आपसे खिताब करते हुए मैं आपसे बहसीयत रियासती सरबराह मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि बहसीयत एक दोस्त मुखातिब हूँ, और एक ऐसे फ़र्द की हैसियत से जिसने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। आप में से बहुत सौ ने आज डिप्लोमा और डिग्रियां हासिल कर ली हैं और मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह तुम लोगों ने तालीम हासिल करके यूनिवर्सिटी में कामयाबियां तमगात हासिल की हैं, इस तरह मैं वसी तर और अजीम अमली ज़िंदगी में तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ जिसमें तुम दाखिल होगे।
Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. पेज नंबर 7। आप में से अक्सर तलबा अपनी तालीमी करियर के अख्ताम पर पहुँच कर ज़िंदगी की दहलीज़ पर खड़े हैं। अपने असलाफ के बरक्स आप खुशकिस्मती से यूनिवर्सिटी छोड़कर एक खुद मुख्तार और आज़ाद ज़िंदगी में दाखिल हो जाओगे। ये ज़रूरी है कि तुम खुद और तुम्हारे दूसरे तालिब इल्म साथी उस इनकलाबी तब्दीली के असरात नताइज पूरी तरह समझते हैं जो पाकिस्तान की तख्लीक के मौके पर नमूदार हुई। We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. Our state is our own state. Our government is our own government, is of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. Freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interest of other people or of the state. हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दिया है। अब हम आज़ाद हैं। हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। हमारी हुकूमत अपनी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है। रियासत के अवाम को जवाबदाह हुकूमत है और रियासत की फ़लाह के लिए काम करती है। ताहम आज़ादी का मतलब लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो, दूसरे लोगों या रियासत के मुफादात से कतई नज़र। A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome, of the dangers that still lie ahead. पेज नंबर 8। अब आप पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, बल्कि इसके बरक्स अब आप पहले से बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए लाजमी है कि हम एक मुतहद और मुनज़्ज़म कौम की तरह काम करें। अब हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम तामीरी सोच अपनाएं, न कि उस ज़माने का जारहाना जज्बा जब हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। आज़ादी हासिल करने के लिए जारहाना जज्बे से तामीरी सोच रखना ज़्यादा मुश्किल काम है। हुकूमत चलाने के मुकाबले में जेल जाना या आज़ादी के लिए लड़ना ज़्यादा आसान है। मुझे उन मुश्किलात के बारे में बताने दो जिन पर हमने काबू पाया है, और इन ख़तरात के बारे में भी जो अभी आगे आने वाले हैं। Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Thousands of men, women, and children were mercilessly butchered, and millions were uprooted from their homes. Over 50 lakh of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state, but those of our enemies who have hoped to kill Pakistan as its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. क्या में पाकिस्तान को रोकने की ख्वाहिश में नाकामी के बाद हमारे दुश्मनों ने हमें कमज़ोर और बर्बाद करने के तरीक़ों की तरफ अपनी मतवज्जो मबजूल कर दी। इसी तरह नई रियासत बमुश्किल ही वजूद में आई थी जब पंजाब और दिल्ली की तबाही और बर्बादी के वाक़यात पेश आए। पेज नंबर 9। हज़ारों मर्द और ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। इन बेघर लोगों में से 50 लाख से ज़ायद अफराद जिन चंद हफ्तों के अंदर पंजाब आए। जिस्मानी और रूहानी तौर पर इन मुतासरा बदकिस्मत मुहाजिरीन की नगादशत और बहाली ने ऐसे मसाइल खड़े कर दिए जो कि एक मजबूत रियासत को भी बर्बाद कर देता। लेकिन हमारे उन दुश्मनों को मायूसी हुई जो इब्तिदा ही से पाकिस्तान को इन तरीक़ों से ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तान ने न सिर्फ इस इंतशार का सदमा बर्दाश्त किया, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत, पाकीज़ा और बेहतर वसाइल से लेस होकर उभरा। There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of her cash balances, of her share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province.
I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. इसके बाद तेज़ी से यक के बाद दीगर दूसरे मुश्किलात उभरे, मसलन हिंदुस्तान का हमारे नक़्द व रकूम को रोकना, फ़ौजी साजो सामान में हमारा हिस्सा और बाद में तुम्हारे सूबे की तकरीबन मुकम्मल मुआशी बंदिश। मुझे कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में तमाम सही सोच रखने वाले लोग इन वाक़यात पर अफसोस का इज़हार करते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे वाक़यात के ज़िम्मेदार लोगों की ज़हनियत तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये लाजमी है कि तुम्हें इन हालात पर नज़र रखनी चाहिए। They stress the importance of continued vigilance on our part. Your main occupation should be in fairness to us yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state. To devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Page number 10. Only thus you can assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. वो हमारी मुसलसल खड़ी नज़र की अहमियत पर जोर देते हैं। तुम्हारा असल काम अपने आप से ईमानदारी और अपने वालिदैन से ईमानदारी और दरहकीकत रियासत से दयानतदारी होनी चाहिए कि तुम अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने मुताले पर मरकूज़ रखो। सिर्फ इसी तरीके से तुम आइंदा ज़िंदगी की जंग के लिए ख़ुद तैयार कर सकते हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम अपनी रियासत के लिए एक असासा, ताकत और फ़ख्र का ज़रिया बन जाओगे। बस तुम सिर्फ इसी तरह मुल्क के दरपेश मुआशरती और मुआशी मसाइल हल करने में मदद दे सकते हो और इसे दुनिया की तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन ममालिक में अपनी मंजिल तक पहुँचाने के काबिल बना सकते हो। Many young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with the heart and soul and support them. मेरे जवान दोस्तों, इसलिए मैं तुम्हें चंद नुकात बताना चाहूँगा जिनके मुतालिक तुम्हें होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने अंदर वतन दुश्मन अनासर से होशियार रहना चाहिए। दूसरा ये कि खुद गर्ज लोगों से ख़ुद को महफूज रखो और उन्हें ख़त्म कर दो जो अपने मकासद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि उन लोगों को पहचानना सीखो जो कि हकीकी मानों में रियासत के दयानतदार और बेलोस खादम हैं, जो दिलो दिमाग से लोगों की खिदमत करना और उनकी हमायत करना चाहते हैं। There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main objective of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. मैं एक दूसरे मामले का हवाला देना चाहूँगा। मेरे जवान दोस्तों, तुम अब तक पुराने रास्तों पर चल रहे हो। तुम अपनी डिग्रियां हासिल करते हो और जब तुम यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में निकलते हो तो आप जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखते हो वो सरकारी नौकरी होती है। जैसा कि तुम्हारे वाइस चांसलर ने पुराने निज़ाम तालीम और मौजूदा हुकूमती निज़ाम को बजा तौर पर बड़ा मकसद बयान किया है, जो कि अभी तक अच्छे तरबियत याफ्ता क्लर्क्स पैदा करना है। Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil service was mainly started by the Britons, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. बेशक उनमें से चंद तरक्की करते हुए अपने लेवल पर पहुंच गए, लेकिन मजमूई तौर पर सिर्फ अच्छे तालीमी याफ्ता क्लर्क्स पैदा करना था। सिविल सर्विस में ज़्यादातर अंग्रेज़ थे। बाद में इसमें हिंदुस्तानी अंसर मुतारफ़ किया गया और बतदरीज इनमें इजाफ़ा हुआ। अच्छा, पूरा उसूल सिर्फ ये जहनियत और सोच पैदा करना था कि एक मुतवासित आदमी BA या MA पास करने के बाद हुकूमती अदारों में मुलाजमत की तलाश करे।
Page number 12. If he had it, he thought he had reached his height. I know, and you all know, what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality, and especially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousand impossible. But in the competition to get government service, most of you demoralized. अगर वो इसे पा लेता है तो वो समझता है कि वो कामयाबी की इंतहा पर पहुंच चुका है। मैं और तुम सब जानते हैं कि इसका क्या नतीजा रहा है। हमारा तजुर्बा बताता है कि एमए पास बंदा एक टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है और ज़्यादातर हुकूमती मुलाजिम हाथ से मजदूरी करने वाले मजदूरों से ज़्यादा बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं जो कि अमीर लोगों के यहाँ मुलाजिम होते हैं। अब मैं तुम्हें इस पुरानी रविश और इस जहनीत से निकालना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर अब जब कि हम आज़ाद पाकिस्तान में रहते हैं। हुकूमत के लिए हज़ारों अफराद को मुलाजमत देना नामुमकिन है। हुकूमत के लिए हज़ारों अफराद को मुलाजमत देना नामुमकिन है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस हासिल करने के मुकाबले में तुम्हारी अक्सरियत हौसला हार जाती है। Government can take only a certain number, and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited by a person who have their own access to grain. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. Page number 13. हुकूमत सिर्फ ख़ास तादाद में अफराद को मुलाजमत दे सकती है और बकिया लोग किसी भी दूसरी जगह मुलाजमत नहीं पा सकते, और इसी तरह वो मायूस उदास होकर हमेशा ऐसे लोगों के हाथ लगने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके पास तोड़ने के लिए अपनी कुल्हाड़ियाँ होती हैं, मतलब उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जहन, अपनी तवज्जो अपने मकासद और मंजिल दूसरी राहों की तरफ मोड़ दो और दूसरे शोबों की तरफ मतवज्जा हो जाओ जो तुम्हारे लिए खुले हैं, और रफ्ता रफ्ता उनमें इजाफा भी हो रहा है। हाथ से काम करने और मेहनत मजदूरी में कोई शर्म नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ, etc., which provides so many opportunities now. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening, and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government services and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. तकीन की तालीम में वसअत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सब शिद्दत से तकीन तौर पर माहिर लोगों को चाहते हैं। आप बैंकिंग, तिजारत, कारोबार और कानून सीख सकते हैं जो बहुत से मौक़े फ़राहम करते हैं। पहले ही आपको मालूम है कि नई सनतें खोली जा रही हैं और नए बैंक, नए इंश्योरेंस कंपनियां, नए तिजारती फर्म्स खुल रहे हैं, और जो ही आप आगे बढ़ते हैं ये भी तरक्की करते जाएंगे। अब ये शोबे तुम्हारे लिए खुले हैं, उनके बारे में सोचो, उनकी तरफ तवज्जो मबजूल कर दो। पेज 14। और मुझ पर यकीन करो कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में जाने के मुकाबले में ख़ुद को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाओगे उस चीज़ में जिसको मैं क्लर्कशिप कहूँगा, जहाँ पर आपको सुबह से शाम तक एक परेशान कुन और मुश्किलात हालात में काम करना होगा। You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. I can give you one instance. I know a young man who was in government service. 4 years ago he went into banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of the firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. अगर तुम सनत और तजारत का पेशा अख्तियार करोगे तो तुम बहुत से मौक़ों के साथ बहुत ज़्यादा खुश और खुशहाल होगे, और इसी तरह न सिर्फ अपने आप की मदद कर सकोगे बल्कि अपनी रियासत की भी। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। मैं एक जवान आदमी को जानता हूँ जो कि सरकारी मुलाजिम था। 4 साल पहले वो 200 रुपये तनख्वाह पर एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में चला गया क्योंकि उसने बैंकिंग के मजमून को पढ़ा था, और वो आज
और आज वो उनकी एक फर्म में मैनेजर है और वो माहाना 1500 रुपये तनख्वाह ले रहा है सिर्फ 4 सालों में। यही वो मौके हैं और मैं आपके जहनों में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह की सोच अपनाएं। पेज नंबर 15, कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, why does the Qaid stress upon youth to be continuously vigilant? Answer. Qaid stressed upon youth to be continuously vigilant because great responsibility rests upon the shoulders of the youth. Pakistan faces great challenges from within and from foreign enemies. In these circumstances, it is necessary for young blood to be more and more vigilant and alert, so as to overcome the difficulties and to prevent enemies from harming our newly created country. Question number 2. What, according to the Qaid, is the prime responsibility of youth? Answer. The prime responsibility of youth is to equip themselves with quality education and to have a constructive spirit. They have to show fairness to themselves, to their parents, and to the state. They also have the responsibility to make themselves ready for the coming battle of life. Question number 3. Having read the text of the Qaid's speech, what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth? Answer. The Qaid says in his speech that the educated youth must have high moral standards. They should have fairness, discipline, constructive spirit, seriousness, strong willpower, honesty, unselfishness, and truthfulness. Question number 4. What advice the Qaid gives to the youth about the choice of career? Answer. Qaid advises the educated youth and says that most of our young people think and desire for government service. Page number 16. But this is not good choice. Most of government servants are living in miserable conditions, so he advises them to divert their attention and mind to other channels and fields. Fields like banking, commerce, trade, and law provide so many opportunities. Question number 5. Compare and contrast the youth of today with the ideal youth of Qaid-e-Azam as described in his speech. Answer. 3 things: attitude, fashion trends, and poor work ethic of modern youth is of great concern. Most of youth have the lack of regard for elderly people. They are not serious in their studies. They remain busy in using their cell phones and most of the time. The extreme fashion trends that today's youth are following is detrimental. Today's youth do not have hard-working mentality, but Qaid-e-Azam describes the ideal youth in his speech and says that they should be honest, hard-working, trustworthy, disciplined, fearless, serious, sober, and fair. Question number 6. Having read the text of responsibilities of youth, what is your view could be the possible role of youth in crisis management of the country? Answer. The role of youth is very important in community. They should have constructive spirit and vigilance. Youth have the capability to cope up and adapt to changes. Thus, they can overcome difficulties. If youth of the country are well educated, well equipped, hardworking, technically sound, they can assist in solving great problems and can prove themselves a source of strength and pride for their country. Question number 7. Qaid says, not only has Pakistan survived the shock of the upheaval than ever. Which upheaval is he talking about? Answer. Qaid-e-Azam is talking about the upheaval of the Punjab and Delhi Holocaust, when thousands of people were either killed or made homeless. The migration on such a large scale put the newly created country in a difficult situation. Our enemies tried in this way to weaken Pakistan, but it successfully survived the shock of this upheaval. Question number 8. Interpret and analyze the following statements from the speech. A. Be aware of the fifth columnist among ourselves. B. Guard against and weed out selfish who only wish to exploit you so that they may swim. C. Hitherto, you have been following the rut. All you think and hanker for is government service. Now I want you to get out of that rut and that mentality, especially now that we are in free Pakistan. Answer. A. Qaid said to the students that beware of those anti-state elements who want to weaken our new state. B. Eliminate those selfish people who use young people to fulfill their scheme of harming Pakistan. C. Qaid says that after getting degrees, do not search for government service. Other fields are also open for you. Page number 18. Writing suggestions. Write a summary of the lesson, Responsibilities of Youth. Answer. See summary section for the answer of this question. Role of youth in the eyes of Qaid-e-Azam. Answer.
According to our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, youth is the greatest asset and source of strength for country. They are real makers of the nation. Their main occupation is fairness to themselves, to parents, and to state. They must devote their attention to their studies. If they misuse their energies, they will always regret. Pakistan is proud of its youth, particularly the students who are nation builders. They should equip themselves with discipline, education, hardworking, and strong moral character. They should be vigilant and alert. In this way, they will be able to prepare themselves for practical life and guard against and weed out selfish people from the society. According to Qaid, government job is not better choice. Youth should divert their attention to other fields like banking, trade, law, and so on, as they overcome the problems of unemployment and other social and economic problems of the country. Youth can bring social reforms and improvement in society. Nation requires their active participation to achieve national goals and help in taking the country towards progress and prosperity. In each and every field, whether it is education, technical field, sports, politics, youth is needed. Page number 19. Youth has the power to take the country to the heights of prosperity, but we have to help them, encourage them, and give them opportunities. Indeed, the youth of a country determine the future of a nation. Vocabulary and grammar. Read each word and underline the silent letter. Word. R-E-C-E-I-P-T. Receipt. Silent letter P. Word. G-N-O-M-E. Gnome. Silent letter G. Word. W-H-A-L-E. Whale. Silent letter H. Word. B-A-L-L-E-T. Ballet. Silent letter T. Word. A-L-I-G-N. Align. Silent letter G. Word. C-A-S-T-L-E. Castle. Silent letter T. Word. R-E-N-D-E-Z-V-O-U-S. Rendezvous. Silent letter Z. Word. G-U-E-S-T. Guest. Silent letter U. Word. D-O-U-B-T. Doubt. Silent letter B. Word. H-A-L-V-E-S. Halves. Silent letter L. Word. W-R-O-N-G. Wrong. Silent letter W. Word. E-X-C-E-R-P-T. Excerpt. Silent letter C. Word. W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Wednesday. Silent letter D. Word. T-H-U-M-B. Thumb. Silent letter B. Word. K-N-O-W. No. Silent letter K. Word. Saw. S-W-O-R-D. Sword. Silent letter W. Question number 2. Consult dictionary and mark which syllable is to stress. Answer. Word. Reception. Stress syllable second. Comparison. Second. Potato. Second. Bedroom. First. 14. Second. 40. First. Delicious. Second. Playful. First. Page number 20. Grammar. Bold and underline the abstract noun in the following. 1. I respect the honesty my friend showed. Honesty. 2. Can you believe that woman's brilliance? Brilliance. 3. To my delight, everyone arrived on time. Delight. 4. She was in great despair when she lost her phone. Despair. 5. We have a lot of hope for the future. Hope. 6. They showed extreme joy when they helped others. Joy. 7. The men had much bravery on the battlefield. Bravery. 8. My mother always shows great compassion for her children. Compassion. 9.
We have a ton of pride in our school. Pride. B. Write a sentence with each abstract noun given below. Love. I have great love for my parents. Pleasure. She smiled with pleasure when she was praised by her father. Calm. It was calm before the storm. Despair. Her voice was full of despair. Truth. We have to accept the truth. C. Tell whether the following nouns are countable or not. Confusion, uncountable. Roof, countable. Traffic, uncountable. Pain, uncountable. Behavior, uncountable. Knife, countable. Cutlery, uncountable. Freedom, uncountable. Mouth, countable. Peace, uncountable. D. Each of these statements contains a collective noun. Identify and then use these collective nouns in your own sentences. Answer. Pile. In cities, piles of garbage can be seen everywhere. Navy. Our navy is stranger than that of India. Audience. The audience listened to his speech attentively. Team. Our cricket team won the final. Council. He is member of the Union Council. Crew. The plane's crew died in the crash. Bands. A band of musicians was invited for the party. Family. I like joint family system. Assembly. He recited some verses from Quran in the school assembly. Faculty. A meeting was held in the faculty office. Flock. A flock of sheep is heading towards the peak. E. Complete the following sentences using appropriate collective noun from the list below. Some of the collective nouns may be used more than once. 1. A swarm of locusts attacked a herd of cattle. 2. A flock of birds is always a beautiful sight. 3. They welcomed the chief guest with a banquet of flowers. Page 22. 4. As we drove down the countryside, we saw a herd of sheep grazing in the fields. 5. The gang of thieves has been arrested by the police. 6. There we saw a man carrying a bundle of clothes on his head. 7. A band of musicians was hired to perform at the party. 8. My friend has a fine collection of old stamps. अजीज़ तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद 2011 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। इदारा ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर के नाबीना तलबा की तालीमी मुश्किलात और रुकावटों को दूर करने के लिए FA ता मास्टर्स लेवल की निसाबी कुतुब और कोर्सेज़, जिनमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ भी शामिल हैं, को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने का एहतमाम किया है ताकि नाबीना तलबा आला तालीम तक रसाई हासिल करके मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ये तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नाबीना तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी इस तालीमी सहूलत से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद। ईमेल hdoatd@gmail.com। वेबसाइट hdorg.net। राब्ता नंबर 0345 9541 838 यानी 0345 95 41 838।